हेलो माय डियर स्टूडेंट्स केमती अच्छे पिलाने आई थिंक बहुत बढ़िया थी आ बहुत फ्रेश आ एनर्जेटिक लगुच आज गोटे नुआ सेशन ने नुआ टॉपिक स्टार्ट कर दैट इज माय डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट दिस इज कौन क्लास 12 रो आमे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करछे डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट पिले ऑलरेडी तमे पीरियोडिक टेबल देखिछो क्लास 11 रे पीरियोडिक टेबल स्टडी करछो पीरियोडिक टेबल ले को आमे जानचे को जनरली को हमर को ब्लॉक्स थाए जेमति एस ब्लॉक जानचे देन को पी ब्लॉक जानचे डी ब्लॉक जानचे ए ब्लॉक जानचे ओके तो आज क्लास वी डिस्कस ओनली कौन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट विषय रे डिस्कस करिया वी डिस्कस रिगार्डिंग कौन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट ओके तो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे बढ़िया हेडिंग दियो इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट प्ले नेचर को देखिछ फास्ट ऑब्जर्व कर प्ले इटा देखो प्ले सनसेट टाइम हेछि टिके टिके प्ले कोन यू कैन सी एक टाइप आउ कोन प्ले फ्लावर देखिछ व्हाइट कलर रो यू कैन सी ओके व्हाइट अपीयर्स गुड प्ले बढ़िया अछि व्हाइट टा हमको बहुत बढ़िया देखा जाए ओके देखा जाए ना व्हाइट रो किना कोन फ्लावर हे गला व्हाइट रोज हे गला दैट मींस को बहुत बढ़िया देखा जाए बट हमें इते सैटिस्फाइड नतो हमको रंग बेरंगी रेड ग्रीन ये रंग हमको बहुत बढ़िया लगे हमको अट्रैक्ट करे बहुत ओके तो नॉट ऑल हमें फुल्ली सैटिस्फाइड करने तो वी हैव नोन दैट को हमको टे कलर बा रंग गुड़ा कौन कहे हमको टे अट्रैक्ट करे ओके ओके तो बेसिकली ये गोटे पिलाटा अच्छी कहूँ मम आई गॉट वेरी बिग डाउट तो पचार मम मुझे गोटे डाउट रही हाउ नेचर मेक्स सो कलरफुल पे आम नेचर को जितने ऑब्जर्व करुचे नेचर बहुत कलरफुल फॉरेस्ट को देखुचे ग्रीनिश कलर अच्छी सन को देखुचे ऑरेंज रेड कलर अच्छी फ्रूट्स देखुचे वेराइटी वेराइटी कलर अच्छी फ्लावर देखुचे वेराइटी वेराइटी कलर फ्लावर्स अच्छी रेड देन कौन होची ग्रीन देन यू नो दैट देन ऑरेंज ते मैक्सिमम कलर आम कौन देखुचे कलर्स देखुचे बट ये नेचर केमती एमती कलरफुल हो जाउची तो मम आंसर कौन दौरान ओके इट इज ए प्रिटी एंड गुड क्वेश्चन मम कहले ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर ओके ओके बट इट कैन बी आंसर्ड व्हेन यू केयरफुली गो थ्रू द नेचर ऑफ एलिमेंट एंड देयर बिहेवियर इन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट तो मम को आंसर देले इट कैन बी आंसर्ड व्हेन यू केयरफुली गो थ्रू द नेचर ऑफ एलिमेंट एंड देयर बिहेवियर इन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट ओके ओके तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट जनरली मु कौन कह पिले जस्ट मु कहूँ डी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट कौन क्या मु डी ब्लॉक एलिमेंट कहबी ओके डी ब्लॉक एलिमेंट कौन पे फास्ट क्वेश्चन तुम पे अराइज हो माइंड रे सर ए डी ब्लॉक एलिमेंट कौन ओके ऑल ऑफ यू तुम पीरियोडिक टेबल देखिछ किछि एई टाइप रो मोर पीरियोडिक टेबल टा आई थिंक दिस इज अ रफ डायग्राम प्ले एई जो पार्ट टा रहला माको को ब्लॉक कहे डी ब्लॉक एठी मोर कौन था एस ब्लॉक देन एठी पी ब्लॉक देन एठी डीटा सीरीज था लैंथेनाइट एक्टिनाइट से जको मु कोन कहे ए ब्लॉक एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल पढ़छ माने तुम एटिक दिन जानथिबो ओके जनरली एबे क्वेश्चन तुम माइंड को आउची ते व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट मोर डी ब्लॉक एलिमेंट कौन ओके डी ब्लॉक एलिमेंट कौन ओके वी हैव मेनी डेफिनेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करी आम कौन बहुत लॉट ऑफ डेफिनेशन देखा डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट वन वी हैव कौन मल्टीपल ओके पिले डी ब्लॉक एलिमेंट रो फर्स्ट डेफिनेशन कहूँ कौन एलिमेंट इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल और n-1 डीप शेल इज कॉल्ड एट डी ब्लॉक एलिमेंट पिले डी ब्लॉक रे कहूँ मोर लास्ट इलेक्ट्रॉन टा तार पेन अल्टीमेट सेल रे एंटर करछो ओके वी गो थ्रू केयरफुली हमें डेफिनेशन को जीवा तो डेफिनेशन कौन कहूँ पिले यू कैन स्टोर द एलिमेंट इन व्हिच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1 डी सबसेल आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट ताले सिंपली मुटेला गोटे वर्ड टा एठी लिखि तुमको जस्टिफाई करछि मोर डेडी डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छी मु काहा को कहबी डी ब्लॉक एलिमेंट काहा को कहबी डी ब्लॉक एलिमेंट सिंपली जेडी मोर लास्ट इलेक्ट्रॉन और
differentiating electron enter କରୁଥିବ into कोड सेल n minus 1 d सब सेल ताले सिंपली मन रख प्ले मोर लास्ट इलेक्ट्रॉन टा एंटर करथुवा मोर n minus 1 d एटा को मु पेन अल्टीमेट सेल भी कहबी आकु को सेल कहबी पेन अल्टीमेट सेल ओके ओके देन प्ले नेक्स्ट डेफिनेशन देखो प्ले द एलिमेंट इन व्हिच the differentiating or last electron enters into penultimate cells are called as d block element. Simply कौन होतबो the differentiating और कौन थी जो last electron टा मोर आउथबो last electron टा मोर कोठी एंटर करथबो बा differentiating electron कोठी एंटर करथो मोर पेन अल्टीमेट प्ले पेन अल्टीमेट कोटा कहबी 1 माइनस n minus 1 d सब सेल को एटा मन कोन पेन अल्टीमेट ओके सेल एंटर कोटा ताको मु कोन कहबी d ब्लॉक एलिमेंट ऑल ऑफ राइट डाउन दिस टू डेफिनेशंस बट प्ले बे देखिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले मोर d ब्लॉक एलिमेंट कोरा ओके बेटो क्वेश्चन माइंडेड वेयर कैन यू फाइंड d ब्लॉक एलिमेंट मो मॉडर्न पीरियोडिक रे प्ले मोइना कहथि जस्ट मिडिल पार्ट को हमें देखिया जेटी हमें कोन पाइबा डी ब्लॉक एलिमेंट को पाइबा मॉडर्न पीरियोडिक जोटा को एस आ पी ब्लॉक रो को बिटवीन रे अछि ओके तो प्ले टिके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो प्ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले प्ले देखो ये जो ग्रीनिश पार्ट रे अछि सेटी मोर को पी ब्लॉक एलिमेंट है देन दो रेड पार्ट रे अछि एटा मोर को डी ब्लॉक एलिमेंट है देन एथि जोटा अछि को मोर एस ब्लॉक एलिमेंट है ओके तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले मोर कोन होबा प्ले एई गोटी को एठी मोर को एलिमेंट एटा मोर एठी मो पाइबी को पी ब्लॉक एलिमेंट एटा को मु कोन कहे फ्री ब्लॉक कहे दिस इज माय डी ब्लॉक प्ले डी ब्लॉक ग्रुप 3 टू नहीं के ग्रुप 12 जाएंगे था ओके देन दिस इज माय को एस ब्लॉक ए जो बॉटम पार्ट रे अछि मु एबे ही जस्ट कहली आकु मु कोन कहि प्ले एफ ब्लॉक एंड यू नो दैट एस ब्लॉक एलिमेंट मोर को हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स मो एस ब्लॉक रे कोन पाइबी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लाइक पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम पी ब्लॉक रे पाइबी कोन हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट तो मोर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट रहिला दैट प्लेस्ड बिटवीन को हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट तो मैंने पहले जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट को मो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहे कौन पाई कहे ट्रांजिशन एलिमेंट ओके तो डी ब्लॉक एलिमेंट को मु कौन पाई ट्रांजिशन एलिमेंट कहे ये कौन कहे पहले दीटा रीजन अछि पहले फर्स्ट रीजन होची जितक डी ब्लॉक एलिमेंट एमान को पाखे थे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल यू कैन राइट डाउन मोर दोज डी ऑर्बिटल पाखे जदी मोर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल अछि देन मा को कौन कहि पहले ट्रांजिशन एलिमेंट तो पहले एमान गोटे ट्रांजिशन शो करंती चेंज शो करंती हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट रो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी ब्लॉक एलिमेंट तो दैट्स व्हाई याको मो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहे आ गोटे भी रीजन लिखियो काई मोटा को ट्रांजिशन एलिमेंट कहे बिकॉज दे कंटेन कम पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल बट पहले मोर जिंक हे गला ओके मागु कहूची ओके वी कैन कॉल देम एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज एमानकर डी ऑर्बिटल कौन थे पार्शियली फिल्ड गोटा कौन कहबी पार्शियली फिल्ड है पार्शियली फिल्ड और इनकम्प्लीट ओके यू कैन राइट डाउन अनदर पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन
कहा को ट्रांजिशन एलिमेंट कहबी से डी ब्लॉक को मु ट्रांजिशन एलिमेंट कहबी जो डी ब्लॉक रे मोर डी ऑर्बिटल टा पार्शियली फिल्ड थिबो ओके 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 okay you can remember the transition element complex they have show a transition or change in most electropositive element of s block to least electropositive or highly electronegativity p block element so that's why we call d block element as a transition element also you consider that most of d block orbital that d orbital ta mora partially filled achi then mu d block element को कोन कहबी transition element okay 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 then we have some mcq for practice okay the element in which last electron enters into n minus 1 d cell subcell or orbital or orbit or orbital we can call please you can just him with definition कहली that is not a big deal so what is your answer I think subcell मोर जदि n minus 1 d subcell ले next question D block are element placed between S and P block to extremely left of the periodic table or to extremely right of the periodic table or below the periodic table. I think D block को मुझे एबे ही कहली ये placed कहाँ है इधर S block और P block रो between और group 3 रो group 12 जाएंगे मुझे कौन कहबी D block element प्ले डी ब्लॉक एलिमेंट को मो अल्टरनेटिव कौन कह ट्रांजिशन एलिमेंट रीजन कौन कोआ को ट्रांजिशन एलिमेंट कहबी जहार डी ऑर्बिटल टा कौन थियो पार्शियली फिल्ड मु ताकू ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहबी बट तमे केस देखो जिंक केस रे कैडमियम केस रे एचजी केस रे एमान को डी ब्लॉक टा कौन फुलफिल थाए मु आकू ट्रांजिशन एलिमेंट कहबिनी तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिशन डू यू वांट टू सी ओनली प्ले वे देखिया खाली डी ब्लॉक एलिमेंट हमें देखिया पीरियोडिक टेबल ले यू कैन सी प्ले यूटी मोर कौन डी ब्लॉक एलिमेंट ओके ओके प्ले डी ब्लॉक एलिमेंट सब जगह बट ये जो जिंक रहिला कैडमियम रहिला ये कौन कहबे यार डी ब्लॉक टा कौन थाए फुल्ली फिल थाए फुल्ली फिल थाए तो आको मु कौन कहबी नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट ओके जार डी ब्लॉक टा फुलफिल थिबो मुटा को ट्रांजिशन एलिमेंट कहबिनी ओके जदी पार्शियली फिल्ड अछि मुटा को ट्रांजिशन एलिमेंट मीन मो गोटे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जदी मोर डी रे अछि मुटा को ट्रांजिशन एलिमेंट कहबी ओके ओके बुझी होछि ओके देन यू कैन आल्सो राइट डाउन द पॉइंट करके लिखि देता बले डी ट्रांजिशन एलिमेंट को कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल ओके नेक्स्ट यू कैन सी प्ले इटा कहूछि प्ले मोर इटा कहूछि प्ले डी ब्लॉक एलिमेंट प्ले भलरे देख प्ले पे स्कैंडियम अच्छी प्ले स्कैंडियम 21 नु स्टार्ट होची यू कैन सी फास्ट को फास्ट ट्रांजिशन सीरीज कहे वाटरबियम रो कौन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहे लुटेलियम को कौन कहे प्ले थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लॉरेंशियम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ओके ako मु ट्रांजिशन कहे ओके 3D 4D 5D ए टाइप सीरीज रे मु कंसीडर करे देन प्ले you can see there mode 110 111 112 होला प्ले एठी तीनटा एलिमेंट है DS110 RG11 एवं मैं फुल नेम कहबी देन तो व्हाट आर द 110 111 एंड 11 प्ले एरा क्वेश्चन पचार जे प्ले जेमति कि मेंडलीफियम पचार छला ओके तो ये क्वेश्चन पचार दे नीट रे एग्जाम रे तुमरो क्वेश्चन डायरेक्ट पचार नि एठरो एलिमेंट प्ले डी 11 ट्रेम कौन ड्राम स्टैंडियम नेक्स्ट आरजी नेक्स्ट सीएन मीन्स कौन कॉपरनेशियम ओके ओके प्ले तीनटा एलिमेंट को खाली लिखि देई था गोटे ये कहि कि तीनटा को गोटे ब्रैकेट करी खाली यू कैन राइट डाउन एठी के लिखि देई था यू कैन राइट डाउन तीनटा एलिमेंट मोर जो एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर 110 रोची 111 रोची एंड 1112 रोची यू कैन राइट डाउन प्ले DS110 कौन मोर स्टैंड फ्रॉम ड्राम स्टैंडियम RG मीन्स कौन रोटेनियम देन CN मीन्स कौन कॉपरनेशियम ओके यू कैन सी दैट ओके नेक्स्ट प्ले पचार हाउ मेनी D सीरीज आर देयर इन D ब्लॉक एलिमेंट ओके हाउ मेनी D सीरीज आर प्ले मु कहली कौन 3D फास्ट आरंभ होची स्टार्टिंग एलिमेंट यू कैन सी मोर कौन 3D अच्छी 4D अच्छी 5D अच्छी 63 चले जनरली कौन आपको फास्ट सेकंड थर्ड फोर मोर चार्टा सीरीज अच्छी प्ले फास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को 3D सीरीज करे सेकंड सीरीज को
4D, थर्ड को 5D एंड फोर्थ को 6D सीरीज को. ओके, फर्स्ट सीरीज रो स्टार्टिंग एलिमेंट के स्कैंडियम, देन एट्री, इटा कौन दैट मीन वाई, देन लॉरेंशियम, देन you can see प्ले होची स्कैंडियम, एट्रिनियम, देन कौन लुटेलियम एंड लॉरेंशियम. एगुडा कहूची कौन प्ले 3D, 4D एंड 5D एंड 6D रो स्टार्टिंग एलिमेंट. ओके, you can see now all these are present in group 3. okay, group 3 ending element zinc, cadmium, mercury, then 112 copernicium. okay, एवे ही कहली that is all these are कौन group 12. after knowing the group number we can also write down the electronic configuration. okay, आमे electronic configuration also लिखि पारिया. प्ले इन स्कैंडियम केस देखो, स्कैंडियम रो केते होची प्ले. ओके प्ले मु ओके प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मु 3D सीरीज रो सब जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखुची. यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी. तापर सब सीरीज रो कहबी बट 3D लिखुची तुम पई. प्ले 3D सीरीज ए फर्स्ट एलिमेंट मोर किया होची. यू कैन प्ले राइट डाउन स्कैंडियम 21. प्ले यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसे आर्गन 18, 3D1, 4s2. okay, you can write down 4s2 3D1. then scandium पर titanium, titanium atomic number is 22. you can write down argon 18, 3D2, 4s2. then titanium by vanadium 23, argon 18, 3D3, 4s2. then copper 24. you know that copper chromium, copper no, chromium 24. तो यार you know that argon 18, 3D5, 4s1 due to extra stability. then manganese 25, argon 18, 3D5, 4s2. then manganese by iron 26, argon 18, 3D6, 4s2. then after iron you can write down cobalt 27, argon 18, 3D7, 4s2. cobalt पर nickel 28, argon 18, 3D8, 4s2. then copper 29, argon 18, 3D10, 4s1. प्ले आपनर आ कम ड्यू टू हाफ फील्ड आमे करछे एटा फुल फील्ड पई करछे. यू नो दैट ऑलरेडी तमे पढि के तो जेन प्ले जिंक रहला जिंक 30, argon 18, 3D10, 4s2. प्ले देखो डी रे डी ब्लॉक टा कम फुलफिल्ड अछि तो दैट्स व्हाई मु आको कम नॉट कंसीडर एज कम ट्रांजिशन एलिमेंट. लाइकवाइज कैडमियम मर्क्यूरी रे भी सेट है. ओके ओके, यू कैन रीड प्रैक्टिस. ओके ओके, देन प्ले यार कम क्रिप्टन 36, 5s2, 4d1, देन जेनन 6s2, 5d1, देन राडन 7s2, 61. प्ले यू कैन सी दैट. देन जिंक केस भी देखो प्ले एठी कोन 3d10 अछि, एठी 4d10 अछि, 5d10 अछि, एठी कोन 6d10 अछि. प्ले देखो स्कैंडियम, एट्रिबियम, देन कम प्ले लुटे लॉरेंशियम. देखो प्ले एतक जो फास्ट एलिमेंट ए केस रे रहउची. यू कैन सी दैट. प्ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इज 1. एमान को डी सबसेल ले प्ले यू कैन सी केते लाखा इलेक्ट्रॉन रहउची 1.
एंड देन जो मोर रोचे पिले जिंक कैडमियम ए केस रे मोर डी रे केते इलेक्ट्रॉन रोची 10 रोची दैट मीन फुल hence can be inferred that the number of d electron is variable from 1 to 10 तले मु एपट को जेतले जाउची ए कोन वेरिएबल होची कोन 1 to 10 रैंक ओके ओके तो प्ले हमें केमती यार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबे प्रेडिक्ट करि परबा केमती होबो प्ले प्ले नोबेल गैस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन नोबेल गैस रो कॉन्फ़िगरेशन देन NS122 then NS122 N-1 D1 to 10 okay you can write down generally electronic configuration also. So Nobel gas ro configuration then NS122 N-1 D1 to 10 okay you can see that. The general electronic configuration of D block element is found to be NS122 N-1 D1 to 10 eta kon charo general electronic configuration of kon D block element that is my ko G E general electronic configuration of प्ले आम देखो फास्ट ट्रांजिशन सीरीज देखो प्ले फास्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन SC21 नु आरंभ हो कि ZN30 रे किना खत्म होची प्ले एठी जो इलेक्ट्रॉन गुडा को भरी होची यू कैन सी दैट एठी इलेक्ट्रॉन भरी होची ते इलेक्ट्रॉन रो एंटर करची आसी कि प्ले यू कैन सी द डी ब्लॉक 3D सीरीज रे एंटर करची कोन करची प्ले 3D सीरीज रे बा 3D सबसेल रे एंटर करची ओके the differentiating electron रोची that enters into 3D subcell तो therefore मु आपको कौन कहूची प्ले 3D series तल generally कौन होची प्ले एठी you can see that differentiating play you can write down differentiating you can see सीरीज एंड जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हबो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हबो 4s122 3d1 to 10 4s122 3d1 to 10 एटा कंप्लीट 3D सीरीज रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस रो कॉन्फ़िगरेशन देन 4s122 3d1 to 10 next you can see that cadmium atrinium 39 cadmium 40 प्ले maximum 10 एलिमेंट थाए सब सीरीज रे ओके 10 एलिमेंट थाए 3D सीरीज 4D सीरीज ओके आमे देखा गेले को एटी लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कोठी एंटर करची 4D सबसेल ले तो दैट्स व्हाई एई सीरीज टा को मु कोन कहबी वी कैन कॉल देम एज लास्ट इलेक्ट्रॉन यू कैन कंसीडर एई केस रे एट्रिनियम आ कैडमियम रे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कोठी करची 4D सबसेल रे बा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4D सबसेल सो दैट्स व्हाई मु आकु को सीरीज करबी 4D सीरीज कहबी ओके दैट विल सो दैट्स व्हाई आकु को सीरीज कहबी मु देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज 4D सीरीज बा आकु प्ले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहंती ओके यू कैन राइट डाउन आल्सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे 5s122 5s122 4d 1 to 10 you can also write down general electronic configuration okay ଏବେ नेक्स्ट सीरीज कहां पे नेक्स्ट सीरीज कहां हमरो 5D सीरीज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल को एंटर करची
5D series कहबी you can see yellow mark करछि मु 5D series याकू कहबी ओके दैट इज कॉल्ड एज 5D series ओके देन कौन पे हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एठी कौन बा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कोठी एंटर करछि 5D सब सेल ले ओके देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन हो 6s1 to 2 5D 1 to 10 देन 6D series लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कोठी 6D series 6D सब सेल ले एंटर करछि okay you can also know that the general electronic configuration okay now you can write down all these are general electron configuration okay. then MCQs for practice fast MCQ पहले फिफ्थ पीरियड अच्छी ठीक भाव 3D पहले फास्ट ट्रांजिशन सीरीज रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन था 4s1 to 2 3D 1 to 10 जोटा को 3D सीरीज कहूली बट ओके देन 4D then 5D तो फिफ्थ पीरियड पाई पचारछि then you can easily find out तो केते होबो you can तो what will be तो आंसर will be कम है 4D 1 to 10 5s 1 to जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन थला ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10 ऑप्शन ए you can write down फोर्थ पाई पीरियड पाई केते होबो फोर्थ पीरियड पाई मोर कोन होबो मोर एटी पीरियड पचार कम यार तो फोर्थ पीरियड पाई हम मोर 3D 1 to 10 4s दैट इज ऑप्शन ए केतेटा एलिमेंट मु एबे कहली दैट मींस 10 एलिमेंट्स केते एलिमेंट रहे मोर 10 एलिमेंट तमे ई सीरीज देखो जदी 3D सीरीज देखो 4D सीरीज देखो 5D सीरीज देखो 6D सीरीज देखो ये सब सीरीज रे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कंटेन 10 ओके ओके डैश एंड डैश फॉर अनोमलियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले एबे ही कहतली ड्यू टू फुल फिल एंड हाफ फिल कॉपर एंड क्रोमियम सोर्स को अनोमलियस इलेक्ट्रॉन पहले कौन थिला कॉपर और क्रोमियम रो कॉपर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन थिला हमरो ओके एबे ही पचे कहली क्रोमियम रो इलेक्ट्रॉनिक आर्गन 18 3D 5 4s1 आई थिंक मु 4s2 लिखि देइथली बोजे नॉट पहले आई थिंक ए क्वेश्चन में मु 4s2 बोजे लिखि देइथली आई थिंक मु आउट करेक्ट कर दोछि तमरो भूल लिखि देइथली पहले आई थिंक 4s2 लिखिथली पहले क्रोमियम रो हबो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट एटॉमिक नंबर 24 आई थिंक मु भूल लिखि देइथली ये हबो आर्गन 18 3D 5 4s1 I think 4s2 लिखि देइथली दैट इज रॉन्ग देन कॉपर रो का हबो 29 रो प्ले आर्गन 18 यू कैन रिमेंबर मु प्रीवियस भी भूल लिखि देइथली 3D 10 4s1 ओके ओके प्ले करेक्ट करनियो ए डीटा मु भूल लिखिथली करेक्ट करनियो क्रोमियम 24 आर्गन 18 3D 5 4s1 कॉपर 24 सॉरी कॉपर 29 आर्गन 18 3D 10 4s1 so that's why you can correct it बोले मिस्टेक टिके हे जाई छी क्विक रे लिखिया बट नॉट वरीड मु आको करेक्ट कर दे छी ओके यू नो दैट बी ओके ओके स्मॉल मिस्टेक अछि यू कैन कंसीडर दैट ओके ओके यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन नो दैट कहली कौन 3D 5 4s1 ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट कॉपर कौन पे एब्नॉर्मलिटी थो करे इलेक्ट्रॉन ने मु एबे ही कहली टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फुलफिल्ड हाफ फिल्ड पे को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थाए सो दैट्स व्हाई कैन राइट प्ले देखो यू कैन सी दैट इट फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है सो दे हैव को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सो दैट्स व्हाई को माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने एब्नॉर्मलिटी शो करंती